topic that we are going to cover in today's lecture is code optimization. So basically, what is code optimization? It is a technique which tries to improve the code by eliminating unused and unnecessary lines. Fine. So basically, the purpose of code optimization is to improvise the execution time so that your code can run fast. The execution time should be low, can be reduced, right? So this is the purpose of the code optimization. So what are the advantages that we can get after the code optimization or by the code optimization? Optimized code will give you fast execution. It can utilize memory efficiently. And it can utilized, right? It can utilized memory efficiently. Resources come waste honge, and also the performance will be better. Performance while the execution of the code will be better. So it will give you fast execution, utilized memory efficiently, and the performance will be better. These are the main advantages of the code optimization phase. Fine. Actually होता क्या है कि 99% programs contains the loops and maximum time जो हमारा execution में जाता है that is for the execution of the loops. तो अगर किसी तरीके से if we can reduce the size of the loop or we can exclude some statement from the loop, then also we can reduce the execution time significantly. Fine. Suppose karo ki there is a loop of I which is going 1 million time and there are 10 statements inside that, and if I could remove one statement from the loop, which means only 9 statements are left inside the loop which are going to run 1 million time, still I can reduce 1 million time execution of the one statement because I have removed that statement from the loop, or I could exclude that statement from the loop. So in this way, these are the techniques through which we can optimize the code so that we should get these advantages that we have discussed right now, right? So how many types of optimizations are there? So basically, two types of optimizations are there. One category is machine independent, and the second category is machine dependent. Most of the modern languages use the machine independent code optimization technique. The reason behind that, because the changes in the code does not depend on the architecture of the machine. So whenever you will optimize a particular code, that particular logic can be applied to some other machine or some other language also. But in case of machine dependent, the whole code optimization is depend on the architecture of the machine. And if that particular changes are working for a one machine, then it is not necessary same optimization techniques you can apply for some other machine architecture also, right? So most of the compiler developer prefer that they should apply machine independent techniques. So first of all, in this lecture, we'll cover machine independent techniques. Then I'll give you introduction about the machine dependent techniques, only the short introduction about the machine dependent techniques, right? So we are going to cover basically machine independent code optimization. Fine. So these techniques we are going to discuss in this lecture. Okay. So basically there are 5
type of or 5 ways of code optimization. First, compile time execution. Right. Now, what is the technique that we apply in the compile time execution? Basically, this technique is a constant replacement. Constant replacement का मतलब क्या है? Let's take one example. Suppose I have declared a constant integer pi and the value of float pi, and the value of this is, as we know, that 3.14. Right. Now, I'm finding out the area of the circle, that is 2 pi r square, and I'm writing pi multiplied by r into r. So basically, if this value is the constant value, so there is no use to write this particular value in the form of a identifier or in the form of a variable. Why? Because in this particular line will take the value of the pi in the runtime and will occupy the space, as well as it will consume some time also for the replacement, right? So instead of that, we can optimize this code and we can write, we should remove this particular line. There is no need to declare the constant. You can write that particular value of the constant directly into the expression. So this statement will be executed at the compile time only, which means there will not be any allotment for this value in the activation record, and there is no memory fetch operation will be done for this particular value at the runtime. So the time, because it is done at the compile time, so final execution time of this statement will get reduced, right? So this is the compile time execution. It is also called as constant folding. It is also called as constant folding technique, right? In the similar way, if you are declaring a user defined constant, for example, you have declared integer x is equal to 10, and further you are using x plus 5, suppose. So there are so many things, there are so many possibilities. This is the normal program that you have made. Now optimize code. What are the ways to optimize it? Either you can write 10 plus 5 directly, or you can write a is equal to 15. There is no problem in that. Fine. So these are the two possibilities through which you can optimize these two lines. And obviously these both lines will work at the compile time. तो बेसिकली हमने करना क्या है कि या तो आप लाइन रिड्यूस करिए या फिर आप कोड को रन टाइम से कंपाइल टाइम पर लेकर के आइए, सो दैट जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड है उसका साइज कम हो, मेमोरी फेचिंग कम हो, मेमोरी एक्सेसिंग कम हो, सो दैट ओवरऑल टाइम जो है वो रिड्यूस हो सके, राइट? नाउ द सेकंड टेक्निक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द first was the compile time evaluation, second is the common sub expression evaluation. This is the second technique that we apply for the code optimization. Fine. So what is the meaning of this technique? This technique says that eliminate all the expressions which have been already computed. Right? And appear again in the code. Now let's take one example. Suppose I have written C is equal to A into B. Now I've written y is equal to a, no problem. And then I've calculated z is equal to y into b plus 10, right? This is the code that I've written. Now you can see that this particular statement is useless, or I'm making the redundancy in here because y is equal to a. So ultimately I can replace this y by a. So what is the optimization of this code?
optimized code. How can you optimize? C is equal to A into B. This is the normal statement. Now there is no need to declare Y, and you are assigning the A value into the Y. So I can write Z is equal to A into B plus 10. Simple. Right? So in this way, you can reduce the size of the code by substituting the sub expression, which are already used or which are redundant in the program. Fine. I'm giving you one practice question. You can try to evaluate this question by exploring this particular point, common sub expression evaluation. So the code is A is equal to B plus C, D is equal to 2 plus B plus 3 plus C, and okay, so this is the code. Can we apply some code optimization technique to optimize this code? You need to find out this, right? Now the next technique. The third technique is called as dead code elimination. Third technique is called as dead code elimination. Okay. So what is this technique? Sometimes expression is unnecessary written. In the code, and it is not required at all. Fine. So we can replace that expression or we can remove that expression permanently. So in this way, we can remove the dead codes. So first of all, try to understand what is the meaning of the dead code. For example, previous example में हमने एक code देखा था. क्या code था? C is equal to A into B. This was the code. And then we have written Y is equal to A. And then we have written Z is equal to, suppose करिए मैंने optimization कर दिया, तो Z is equal to A into B plus 10. This was the code after optimization. So this particular line is of no use. So this is called as dead code. So we can remove this line because unnecessary writing this particular line has no use. It will take the memory as well as it will take the execution time also, right? So these type of lines are called as dead code lines. We can take one more example, like suppose I have declared a constant x is equal to 0, and then I'm writing if x, and then there are certain statements, and we are closing the if. What is the use of this? If x का मतलब क्या हो गया? You are checking that whether the value of x is true or false. So that we can do with by writing directly this also, or by writing this also, right? So there is no use of this statement. So it is a dead code, right? Okay. Now the fourth technique is called as code movement. Code movement. Now what is this technique? If any of the code, if any of the statement in the code which is written inside the loop but can be moved out from the loop, right? So this technique is called as code movement. कोई भी स्टेटमेंट आपने लूप के अंदर लिखा, लेकिन आपको इवैल्यूएशन के बाद पता चला कि वो स्टेटमेंट अगर आप लूप के बाहर भी लिखते या लूप में आप ना लिखते तो भी आपका लूप एग्जीक्यूट हो जाता और आपका आउटपुट सेम आता. So this technique is called as code movement. We move that statement out from the loop and then the remain code will be same. So let's take this example. See this example. Suppose
I have written while a को डिक्लेयर कर देते हैं पहले, इंटीजर a is equal to 11 and I have declared y while a is greater than 0, right? This is the loop. Then inside the loop I have written x is equal to b plus c, some expression, right? Then if a is a modulus x is equal to 0, तो हम क्या करवा रहे हैं, प्रिंट एफ करवा रहे हैं a को, फाइन. अदरवाइज ये लूप चलते जा रहा है, a इज इक्वल टू a माइनस 1 कर रहे हैं और ये लूप चलते जा रहा है, फाइन. नाउ सी दिस स्टेट, सी दिस लूप. ये आपने लिखा है इनिशियलाइजेशन इज नेसेसरी, स्टॉपिंग कंडीशन इज नेसेसरी. What's the use of this statement? This statement is calculating value of x, but b and c both are not dependent for the loop. It is a constant value. It is a stable value which is calculated for the x and it is not changing at all because we are not using b inside the loop. We are not using c inside the loop. So what changes can we perform? So can we calculate x outside the loop? So this is the optimized code and your output will remain same as it is because the value of b and c is not changing inside the loop, which means the value of x can be calculated outside from the loop. So you have saved approximate 11 lines or 11 time execution of a single line by this optimization, right? So this is called as code movement technique. Now the next or last technique of the code optimization is called as strength reduction. Now what is the meaning of a strength reduction? We have already studied the precedence of the operators, right? This topic we have studied in Java, C++, C, everywhere, whatever programming language you have learned. Also, I've taught you in the compiler also. So the concept of the operator importance used for the strength reduction, right? So what is the definition of this? Replacing the high strength operator by the low strength operator. आपको हैवी ऑपरेटर्स, हैवी प्रेसिडेंस ऑपरेटर्स की बजाय कौन से ऑपरेटर्स यूज करने हैं जिनकी जो प्रेसिडेंस है, जिनकी जो स्ट्रेंथ है वो कंपैरेटिवली कम हो. जैसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का जो प्रेसिडेंस होता है, जो स्ट्रेंथ होता है, वो कंपैरेटिवली प्लस से हाई होता है. तो हम क्या कर सकते हैं, सपोज अगर हमारे कोड में दिया हुआ है c is equal to a into 2, so I can optimize this with the help of writing c is equal to a plus a. This will optimize my code, right? So strength reduction का मतलब try to optimize the code by replacing the heavy operator with the low strength operator. You can write this code by writing this also. You can use the left shift and you can write this code like this, a left shift y1, right? So the answer will be same. It is actually a into 2. So this is the fifth technique which is used for the strength reduction. Fine. Okay. So in the start of the lecture, I've told you that most of the time of the program execution spent on the loop execution, right? So our objective is, the main objective of code optimization is to optimize the loop. So we will focus on the loop optimization techniques. This is the main focus. क्या करना है हमें, जो भी प्रोग्राम में लूप लिखा हुआ है उसको ऑप्टिमाइज करके हमें देखना है. फाइन. सो देयर इज अ फ्लो. लूप ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक के कुछ स्टेप्स होते हैं. तो सबसे पहला स्टेप है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिटेक्ट द लूप्स.
अब हमारा पूरा का पूरा जो कोड है वो किस फॉर्म में है, 3 एड्रेस फॉर्म में है। और 3 एड्रेस फॉर्म में एज वी नो दैट कि हमारा जो लूप भी होता है वो हम इफ और एल्स के फॉर्म में लिख देते हैं, इफ और गो टू के फॉर्म में लिख देते हैं। सो इट इज नॉट इजी टू डिडक्ट whether loop is there or not. It can be simple if or it can be loop also, right? So first step is deduct that a particular if statement is denoting the loop or not. So deduct the loop. Then use control flow analysis. उसके बाद आपको क्या करना है, कंट्रोल फ्लो एनालिसिस करना है यूजिंग प्रोग्राम फ्लो ग्राफ। प्रोग्राम फ्लो ग्राफ आपको क्या डिजाइन करना है, प्रोग्राम फ्लो ग्राफ डिजाइन करना है। इसका शॉर्ट फॉर्म वी कैन राइट PFG और इसका शॉर्ट फॉर्म हम लिख देते हैं CFA। हमको CFA करना है एक डायग्राम ड्रॉ करके जिसको हम कहते हैं PFG। तो आपको कंट्रोल फ्लो एनालिसिस करनी है बाय ड्रॉइंग दी प्रोग्राम फ्लो ग्राफ। इट इज अ काइंड ऑफ फ्लो चार्ट जो आपको ड्रॉ करना है और वहां से आपको एनालाइज करना है कि लूप बन रहा है या लूप नहीं बन रहा है। तो फॉर डिडक्शन वी डू, फॉर डिडक्टिंग द लूप वी यूज CFA and for CFA we have to draw the flow chart that is called as PFG, right? So after drawing the PFG आपको क्या करना पड़ेगा इसमें, find the basic blocks। आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे कि बेसिक ब्लॉक्स PFG में कौन कौन से हैं। दिस यू नीड टू फाइंड आउट, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज बेसिक ब्लॉक? बेसिक ब्लॉक की बात करते हैं हम। बेसिक ब्लॉक की डेफिनेशन क्या है? सो बेसिक ब्लॉक इज सेट ऑफ स्टेटमेंट्स or the sequence of statements. It is better that we should write sequence of a statement, right? Sequence of statements किसमें लिखे हुए हैं, ऑफ 3 एड्रेस कोड। हम बात कर रहे हैं 3 एड्रेस कोड की। सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ 3 एड्रेस कोड वेयर कंट्रोल विल एंटर at the start and leaves at the end without any jump, right? So basic block की definition क्या है? These are sequence of statements or set of statements of 3 address written in the 3 address code where the control will enter at the start and the control will leave at the end without any jumping. So these are called as basic blocks. Fine. तो क्या करते हैं, आपको बेसिक ब्लॉक्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। अब बेसिक ब्लॉक्स को फाइंड आउट करने के लिए यू नीड टू फाइंड आउट द लीडर्स ऑफ द बेसिक ब्लॉक्स। तो अब आपका सीक्वेंस क्या बना, आपको चाहिए क्या, आपको लूप्स चाहिए 3 एड्रेस कोड में। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल फ्लो एनालिसिस करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम फ्लो ग्राफ बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिक ब्लॉक्स निकालने पड़ेंगे। और बेसिक ब्लॉक्स आपको कैसे मिलेंगे, जब आप लीडर्स फाइंड करेंगे, राइट? यू नीड टू फाइंड आउट द लीडर्स इन द कोड। आपको उसके लिए लीडर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ओके फाइन, हम देखते हैं कि लीडर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। फाइंड द लीडर्स, बेसिक ब्लॉक के लीडर्स फाइंड आउट करने हैं हमें, राइट? सो देयर आर सर्टेन कंडीशंस। कंडीशन नंबर 1, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑलवेज लीडर। जो भी आपके प्रोग्राम का फर्स्ट स्टेटमेंट होगा वो हमेशा लीडर है। 2, सेकेंड क्या है, स्टेटमेंट नंबर written with go to
इज अ लीडर। जो भी आपने गो टू के साथ स्टेटमेंट लिखा है वो एक लीडर है, राइट? वो लाइन लीडर है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लिखा इफ कोई कंडीशन एंड गो टू 10, सो 10th नंबर का जो लाइन है दैट इज अ लीडर। सिमिलरली अगर आपने कोई अनकंडीशन गो टू लिखा है, आपको दो तरीके के मैंने जंपिंग स्टेटमेंट बताए थे, कंडीशनल जंपिंग एंड अनकंडीशनल जंपिंग। तो जो ये वाली जंपिंग है दिस इज कंडीशनल जंपिंग, और जो ये वाली जंपिंग मैं लिखने जा रही हूँ दिस इज अनकंडीशनल जंपिंग। तो चाहे आपके गो टू के बाद गो टू जो है वो कंडीशनल जंपिंग हो या फिर गो टू अनकंडीशनल जंपिंग हो, तो जो गो टू के बाद आपने स्टेटमेंट का नंबर दिया है दैट स्टेटमेंट विल बी अ लीडर स्टेटमेंट, राइट? नाउ सी statement after the condition or या इसको कहते हैं statement after the condition or unconditional go to is a leader, right? What is the meaning of that? अगर आपने यहां पर लिखा है if condition go to, and सपोज करो यहां मैंने कोई स्टेटमेंट लिखा होता और उसके बाद go to 20 लिखा होता, तो पहली चीज 10 इज अ लीडर, दिस लाइन इज ऑल्सो अ लीडर। थर्ड कंडीशन पढ़ी है स्टेटमेंट आफ्टर द कंडीशन, ये कंडीशन लिखी थी आपने और इसके बाद ये वाली लाइन पर आपने एक स्टेटमेंट लिखा है, सो दिस लाइन विल बिकम द लीडर, फाइन। एंड अनकंडीशनल गो टू, दिस इज ऑल्सो अ लीडर। सपोज करो अनकंडीशनल गो टू, ये लाइन नंबर 20 थी, इस पे कुछ लिखा था और इसके बाद यहां मैंने कुछ लिखा था, सपोज करो एंड लिखा था, सो एंड विल बिकम अ लीडर, राइट? सो 20 भी लीडर होगा और 20 के बाद जो लिखा हुआ है ये भी लीडर होगा। सो दीज आर दी 3 स्टेप्स टू फाइंड आउट द लीडर। पहला स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑलवेज अ लीडर। सेकेंड क्या है? स्टेटमेंट नंबर रिटन विद गो टू और conditional or unconditional, both statement number will be leader. And last is statement after the condition or unconditional go to will be a leader, right? So these are the 3 steps which are used to find out the leaders. Now we'll see one example how to find out these 4 things, right? तो क्या करें? We should take one example program. एक sample program लेते हैं, say factorial of a number. We'll find out factorial of a number. So I have written factorial x as a function. Integer f is equal to 1, जिसके अंदर factorial calculate करेंगे for I is equal to 1, I is less than equals to n and I plus plus. Okay, then f is equal to f into I. सपोज करो चलो रिटर्न f कर दिया हमने, दिस इज माय फंक्शन, फाइन। तो सबसे पहले इसका क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू राइट दी 3 एड्रेस कोड फॉर दिस फंक्शन। 3 एड्रेस कोड लिखते हैं इसका। सो f इज इक्वल टू 1, लाइन नंबर लिखते जाते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज f इज इक्वल टू 1, ओके। तो स्टेटमेंट नंबर 2 i इज इक्वल टू 1, आपने लूप को इनिशियलाइज करा है। नाउ देयर इज अ कंडीशन इफ I is less than equals to n, then go to, कहां जाना है पता नहीं, 4 उल्टी लगाते हैं, एक मिनट, कंडीशन उल्टी लगाते हैं, ग्रेटर देन n, देन गो टू, फाइन। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आपका लूप खत्म हो जाएगा, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है विच मीन्स आपका जो i है वो n से छोटा है, तो हमें क्या करना है? फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। तो हमने t1 एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया f इंटू आई, एंड लाइन नंबर 5 पर हमने क्या करा? लाइन नंबर 5 पर हमने f इज इक्वल टू t1 कर दिया। लाइन नंबर 6 पर हमने t2 इज इक्वल टू फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के बाद जो i है उसको इंक्रीमेंट करना है, एंड लाइन नंबर 7 पर आपने क्या करा? i इज इक्वल टू आपने t2 कर दिया।
लाइन नंबर 8, लाइन नंबर 8 पर आप कंडीशन को दोबारा चेक करेंगे, तो हमने क्या लिखा है, गो टू लाइन नंबर 3. सो ऑब्वियसली जो लाइन नंबर 9 है उस पर हमने रिटर्न वैल्यू कर दिया है. तो इसका मतलब अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, यानी आपको लूप के बाहर आना है, तो आप कहां पर जाओगे, गो टू लाइन नंबर 9. So this is 3 address code of this factorial function, right? Now we need to find out the leaders inside the program. तो पहली कंडीशन, लाइन नंबर 1 is always a leader. तो इसका मतलब ये लीडर हो गया, जो लाइन नंबर 1 है वो मेरी लीडर हो गई. दूसरा आपको क्या बोला था मैंने, अगर आपने गो टू स्टेटमेंट लिखा और गो टू के साथ आपने जो लाइन नंबर दिया है, दैट विल बी अ लीडर. आपने पहला गो टू कहां लिखा है, इफ i is greater than n then go to 9, which means 9 is a leader. Okay, now next statement आपने कहां लिखा है, go to 3. go to 3 का मतलब this line number is a leader. I've told you that according to the second condition of the leader, if there is any go to statement, whatever line number is there with the go to statement, that line will become a leader, right? Now the next or last condition for finding out the leader, wherever you have written the go to, the next line will also become a leader. So you have written go to 9 here, so line number 4 will become a leader. Now you have written go to 3, line number 9 should be a leader, but it is already a leader, so there is no problem. So how many leaders we found? We found 1, 2, 3, 4, 4 leaders we found in this 3 address code, right? Now we'll draw the program flow graph. Fine. So how we'll do the program flow graph? How we'll draw the program flow graph? So let's draw the program flow graph. How many leaders you have? You have 4 leaders. So draw the 4 blocks. Okay. Now most important thing, the leader will create a block. Leader is basically a starting statement of the block, and it won't contain the next leader inside it. Okay, so this is the leader. First line is a leader, and it will contain line number 1 and line number 2, but won't contain 3, because 3 is a starting of the next leader. Now what about the third 3, leader number 2? Leader number 2 will start from line number 3 and will end to the line number 3, because if it will come to line number 4, the next leader will start. So leader will create a block. Leader will be the first line of the block, and it won't contain the next leader, right? So it will end before the next leader. Now what about the third leader? Third leader will start from line number 4 and will end to the before the next leader. So these lines 4 to 8 will be contained by the third leader. Now see the last leader. This is my last leader, and the last leader will contain a single line, that is line number 9 only. Okay, so I'm giving the names of this block. So suppose I have given this block name is B1, this block name is B2, this block name is B3, and this block name is B4, suppose, right? So this is leader number 1 block, this is leader number 2 block. Okay, and this is leader number 3 block, this is leader number 4 block. Now we have to join all the blocks. So from block number 1, I'm coming to the block number 2, which means f is equal to 1, I is equal to 1,
then I'm checking a condition if I is greater than n. Okay. Now, if I is greater than 1, then I have I have one possibility that I can go to 9. Line number 9 belongs to the block number 4. So I can go to block number 4 if condition is true. Now, what about if condition is false? If condition is false, then I have to go to the block number 3 where line number 4 to 8 are written. That is what is going to be happen inside the loop. Now, when this block 3 is completed, it is saying that go to 3. Go to 3 ka matlab, I have to come back to leader number 2 again. Now see the diagram clearly. Fine. B1 block, B1 से आप B2 पर आ रहे हो, कंडीशन को चेक कर रहे हो. अगर कंडीशन ट्रू होती है तो आप गो टू 9 यानी ब्लॉक नंबर 4 पर जा रहे हो, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो आप ब्लॉक नंबर 3 पर आ रहे हो, यानी आप फैक्टोरियल को कैलकुलेट कर रहे हो, कंडीशन को वापस से चेक कर रहे हो, और कंडीशन को वापस से चेक करने के लिए अगेन यू आर कमिंग बैक टू ब्लॉक नंबर 2. ओके, सो नाउ दिस इज योर कंट्रोल फ्लो ग्राफ. नाउ व्हाट इज द कंट्रोल ग्राफ एनालिसिस? अगर हम इसका कंट्रोल ग्राफ एनालिसिस करें तो क्या है? इफ देयर इज एनी साइकिल फाउंड बिटवीन द blocks, if any cycle found between the blocks, then it is representing a loop. So you can clearly see that between B2 and B3 you are finding a cycle, which means B2 and B3 दोनों block मिलकर के क्या बना रहे हैं? Loop बना रहे हैं. So we have deducted the loop. So what were these steps to deduct the loop? आपको loop deduct करना है, उसके लिए आपको कंट्रोल ग्राफ एनालिसिस करनी पड़ेगी. कंट्रोल ग्राफ एनालिसिस करने के लिए आपको प्रोग्राम फ्लो ग्राफ बनाना पड़ेगा. सो दिस इज योर प्रोग्राम फ्लो ग्राफ. दिस इज द प्रोग्राम फ्लो ग्राफ, राइट? प्रोग्राम फ्लो ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या बनाने पड़ेंगे? बेसिक ब्लॉक्स बनाने पड़ेंगे. और बेसिक ब्लॉक्स बनाने के लिए व्हाट यू नीड टू डू? यू नीड टू फाइंड आउट द लीडर्स. सबसे पहले आपने क्या करा? whatever code was given to you, आपने सबसे पहले इस कोड का क्या करा? 3 एड्रेस बना लिया. 3 एड्रेस बनाने के बाद आपने इसमें लीडर्स फाइंड आउट करे. लीडर्स से आपने ब्लॉक फाइंड आउट करे. ब्लॉक को आपने ड्रॉ करा, एंड देन you have connected these blocks with the flow graph. And after that, you found that if there is a cycle between the block, then it is a loop, right? So we'll finish the lecture here only. I hope the program flow graph and the loop deduction process is clear to you. So for your practice, I'm giving a question to you. Before coming for the next turn, you have to clear about, you have to create the program flow graph and the loop deduction steps for this particular code. So suppose I need to find out the table of n. So what I did, I've taken an integer t in which I'll calculate the table. And for I is equal to 1, I is less than equals to n and I plus plus. ये loop लगाया हमने, and we are calculating t is equal to I into n, right? This is my table. Now you need to create the 3 address code for this particular function. And after creation of the 3 address code, you have to do the program flow analysis to find out the loop in the 3 address code, right? So this is all about today. In the next lecture, we'll do the code optimize. We'll study the code optimization technique for the loop optimization. First, we have deducted the loop. Now we'll apply the code optimization technique inside the loop.